جو انفارمیشن سینٹر کی انچارج ہے پولیس آفیسر، انہوں نے مجھے بتایا کسی وقت انسان سوچتا ہے یہی محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ ادھر بھی نہ وہی چیز ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ خوف جو ہے نا یہ ہمارے ذہن سے نہیں جاتا. بچے مار رہے ہیں، کوئی کرو ہمیں امداد دو، مر جائیں گے بھوک سے، ہم جل جائیں گے. بہت زیادہ ٹائم لگائیں گے. وہ بیوروکریسی کا یہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم بہت لیتی ہے. which has been affected. There have been many villages that have been completely wiped out. میری بیوی فوت ہو چکی، بابی فوت ہو چکی، دوسری بابی میری فوت ہو چکی، چھوٹے بچے میرے دو وہ بھی. یہ گرد غباری تھی، کوئی چیخ پکار تھی، ہم نے پھر زخمی وغیرہ نکالی یہاں سے. میرے دماغ میں تو صرف یہ ہے کہ یا اللہ یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک اور سونامی آ گیا. گھر ملبے کا ڈھیر بن زیادہ تعداد میں یہاں 310 اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. اس وقت میں، میرا بڑا بیٹا اور میری بیوی یہ تینوں اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے. 8 اکتوبر کی بدقسمت صبح تھی اور 3 رمضان المبارک جب 8:52 پر یہ زلزلہ آیا. لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کس طرح موت کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہے. یکایک دیواروں میں دراریں پڑنے لگیں، چھتیں گرنے لگیں. لوگ دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف لپکے. وہاں سیڑھیاں ہوتی تو وہ اترتے، اور ہم لوگ اس بلڈنگ گرنے سے چند سیکنڈ پہلے یہاں سے نکل بھاگے تھے. تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ ایک ایسا منظر جو آنکھیں کبھی نہ بھول سکیں گی. وہ لوگ جو زخمی تھے ان میں اٹھ کے بھاگ جانے کی بھی سکت نہیں تھی. جو مر چکے تھے اس کے ساتھ اٹھ کے بھاگنے کی خواہش بھی مر چکی تھی. یہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو ایک آپ اس کو قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں. People just didn't realize how bad it was. Because this is an earthquake zone and people are used to small tremors, it was only when they saw the images on the local television of the tower that had collapsed in Islamabad, and there was only one tower in the entire city that had collapsed, that people realized that it was more damaging than previous earthquakes that had occurred. سب سے پہلے یہاں جو لوگ مدد کے لیے پہنچے، ریپڈ جو انگلستان سے آئے تھے، خود پاکستان نیوی کے لوگ اور پاکستان آرمی کے لوگ یہاں پہنچے. لیکن ہمارے لوگوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی، ان کے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھا جس کی کہ اس ریسکیو آپریشن میں ضرورت تھی. There were two groups of British helpers. The first group worked directly on the Magala towers, and I think it's a great tribute to the work they do and the speed at which they reacted that they were here within 24 hours. So they were actually pulling survivors out of the ruins within 24 hours of the earthquake having happened. We were greeted by one tower block that had collapsed, and loads and loads of people were sort of crawling all over it and looking for people, trying to dig people out with their own bare hands and what equipment they had. They had managed to get some machinery on site as well, and they were starting to pull the building apart with that machinery, which for us is quite a horrendous thought at that early stage and after a disaster. And due to the way the structure was, and we had 12 stories compacted into probably 7 or 8 metres, the only option really was to tunnel in laterally, because the people we found were right at the bottom of it all. Once you enter into the voids, into the tunnels that we have to make, you're working extremely small spaces. Sadly, there are a lot of deceased around. We have to work through and over and around that in order to get to those that have survived. And there were thousands of people stood in silence, not even shuffling their feet, so that we could get our listening equipment to work.
and that enabled us to find sort of 5 out of the 7 people we found at that site. Then a second wave came when we put together, with DFID's help, a charter plane which had a number of other rescue teams but also emergency relief supplies. That came in later on the Sunday afternoon, that flight, and that the rescue people who were on that flight, we flew directly up to the most affected areas in Muzaffarabad. मैं मुजफ्फराबाद से आई हुई हूँ। जिस वक्त ज़िलज़िला आया उस वक्त मैं सोई हुई थी कमरे में। हम उस वक्त 3 घर में थे, तो बच्चे जो थे वो स्कूल में थे। जब ज़मीन हिलने लगी तो मुझे ये महसूस होने लगा कि या अल्लाह कोई दरवाज़ा खटका रहा है ना। जो ही मैं बाहर निकलने लगी तो वो दरवाज़े ज़ोर से एकदम से घड़म की जैसे आवाज़ आई। बाहर जब मैं लॉन में निकली तो उस वक्त मुझे यही महसूस होने लगा कि आज आखिरी दिन है हमारा, क़यामत है। क्या ख़बर हम ज़िंदा बचेंगे या नहीं। मकान जो थे ज़मीन बोस होने लगे ना, नीचे ज़मीन धंसने लगी तो धराड़े बीच में क्रैक्स आ गई। तो फिर बच्चों को कोई नहीं पता था ये किधर हैं, बस कुछ नहीं सोचता था कि हम क्या करें। Our main concern was for the children because they're the most vulnerable section of society. The government found that the only charity who had enough experience in Pakistan and credibility to take care of these children was SOS. Because our supporters group had been arranging sponsorship for children for the last 10 years. जो सामान हमारा जो था वो बिल्कुल मकान में दबा हुआ था। थोड़ा बहुत जो सामान मिला वहाँ पे मैंने शेल्टर, ये खेमा, एक टेंट लगवाया। तो 1.5 माह वहाँ पे मैं रही। तो वहाँ पे इज़हार भाई आए तो वो हमें मिले, इस तरह करके आप हमारे साथ चले तो वहाँ इस्लामाबाद, वहाँ पे हम आपको रिहाइश भी देंगे, सब कुछ मुहैया करेंगे। इन बच्चों को यहाँ पे अच्छा माहौल मिला, तालीम इनकी पूरी हुई। It was primarily a children's disaster. 40% of the population is under the age of 14. I was really horrified at what I saw out there. The hospitals were overflowing with casualties. The air was full of helicopters buzzing around, landing at the hospitals and just letting casualties out and just leaving them in the car park because the place was so full, so chock-a-block with casualties. हमने कहा ये कुछ और है, फिर हम वहाँ से भागे। आगे दूसरे स्कूल बिल्डिंग थी ना, वो गिरने लगी। हम उधर फिर भागे। उधर से हम भागते भागते घर गए। जाके हम इधर घर की तरफ इधर उधर फिर आगे, घर गिरा हुआ था। जब घर के पीछे की तरफ गए ना, अम्मी और बहन आगे फोत हुए गिरे हुए थे। The most immediate and pressing needs was to get to the people because it was a mountainous area, and for us it was to send out search and rescue teams for the children who had nobody to look after them and nowhere to turn to. Children who'd run home from school and found that their houses had gone. At the time it happened, all the children had been at school, and out of 11,500 schools in the area, 10,000 were destroyed. जब ज़िलज़िला आया तो हमारा घर गिर गया और अम्मी अब्बू अल्लाह ताला के पास चले गए। It's easy to underestimate the psychological impact. So it's not just about physical infrastructure, it's not just about mending bones and putting bandages on and doing amputations and that sort of stuff. It's also about, you know, the psychological support that's needed. A lot of these children lost parents, lost everyone. British Airways supports 120 communities and projects and charities in the world, and through that they've offered us tickets and facilities to fly goods out and helped us in our fundraising, which has been very important. The children after the earthquake have been kept in an emergency shelter in Pindi, which was donated very kindly by the Bishop of Islamabad, and they will be there for another year. With the expertise that we have and with the other children existing who've come through the system because it's been there 30 years, we know that they will hopefully come out the other end well-adjusted, happy, confident, viable members of the community.
UK, despite its own pockets of difficulty, is one of the richest countries in the world. We are a major donor in Pakistan because of the needs of Pakistan. There are a very large number of poor people in Pakistan, so we have a development program here that's helping in the long term with the government and the people of Pakistan to address that problem. So we're friends, we're neighbours, we're allies, and we are part of humanity. So it's an obligation, but it's also a desire that was strongly articulated by the people of Britain and by UK ministers. There's been a lot of money and a lot of food and clothes been pledged so far, but it's going to take a lot more from people back in England to try and do a little bit more. Obviously the British service people here are doing a fantastic job, obviously getting as much in as they can, all the aid in, flying in and out, all the left, right and centre all day. There was a secondary role that I was obviously involved in, which was the public information role, which meant going on the UK media in particular, in terms of radio, television, to explain back in the United Kingdom what was going on and to help raise awareness of the devastation caused by the earthquake. ब्रिटेन में ख़ुसूसी तौर पे हमने सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं लेकिन गैर मुसलमानों के साथ भी बहुत बड़ा ताउन किया था। हमें यहाँ पे यहूदी लोगों ने भी इमदाद दी थी, सिख लोगों ने इमदाद दी थी और ईसाइयों ने तो बहुत ही बड़े दिल से और बड़े कुव्वत से इमदाद दी थी। Well, we came this morning to offer our support and also to bring some collection boxes that the children have filled over the weekend. आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आवाम से, जो गैर मुसलमान आवाम से इन लोगों ने 59 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दी थे। The British High Commission and the Department for International Development, we are moving blankets, winterized tents. The Disasters Emergency Committee is to launch a national appeal. ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो किसी भी हादसे में ब्रिटिश अवाम ने दिया है और उसके अलावा मुसलमानों ने जो यहाँ पे तकरीबन 3 मिलियन मुसलमान हैं उन्होंने 20 मिलियन पाउंड जमा किया था। Editor Mark Easton is at Luton Central Mosque. जब ज़लज़ला आया तो यहाँ की पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और just Kashmiri community या पाकिस्तानी community नहीं बल्कि overall all the communities. Here, British charities say they've been promised millions of pounds. We are getting lots of donations from non-Muslims. Every person that comes in with a donation. It's probably about the size of a small football field. और इस वक्त तक 70 मिलियन पाउंड से ज़्यादा वो जो है वो दे चुके हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। Everyone was very affected, and it wasn't just people in Pakistan. There's about 600,000 British people with links to that part of Pakistan, and everyone I know very, very moved, very concerned. ये गाँव बल्कि सब मुसलमान बहुत पीछे जा चुके हैं। अभी इसको बहुत वक्त लगेगा। ये लोग तंजीम वगैरह ऑक्सफाम वाले बहुत ताउन कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द हम लोग ठीक हो जाएंगे। We were able to mobilise our team in Pakistan very quickly. We've been working in Pakistan for the past 35 years, which made it easier for us in terms of being able to respond immediately. We had phone calls from colleagues there. The phone lines were down. It's quite difficult to communicate, but within hours we had a fair idea of what was happening on the ground, so we knew that there'd been widespread devastation in Kashmir. सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस वक्त जो हमारे कुएं थे, चश्मे थे, वो ख़त्म हो गए थे और दूर दराज वो रह गए थे और पानी की सबसे ज़्यादा मुश्किलात थी हमें। और उसके बाद ऑक्सफाम तंजीम आई, उसने हमें पानी लगा के दिया। ये जो स्कीम है ये माली ताउन यूके के लोग और यूके की हुकूमत ये फराहम कर रही है। इस स्कीम से तकरीबन 200 घरों को पानी मिल रहा है और इसमें से 3 स्कूल है और 2 मस्जिदों को। अभी पहले लोग तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी सरों पे लाते थे, अभी इनको घरों के करीब पानी मिल रहा है। Things have definitely improved. I was last in Pakistan in April of this year and I saw a massive difference from when I was there in the early days of the earthquake. People have moved out of the camps. Nobody wants to live in a camp. Nobody wants to live in an environment where there's countless people, around, where there's no privacy, where you can't cook your own food. Nobody wants to live in such an undignified way. So they were relieved to get back to their land, to get back to their homes. But in many cases, there's nothing for them to return to. They've actually just gone back to rubble. जिस वक्त ज़लज़ला हुआ उस वक्त हम लोग
ये सोच रहे थे कि जो बच के हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं था, मकान नहीं थे, कपड़े थे नहीं थे जो हम लोगों के, क्योंकि सर्दियाँ थी। ये रिलीफ मिली हमें बहुत ज़्यादा, चादरें मिली जो जिसके हमने शेड वगैरह बनाए। The most important thing is it's not a short-term thing. You have to be concerned about people long-term as well. It's all good and well when the media is engaged and interested. It's very easy then to be able to, take a pound out of your pocket and hand it over to a charity. But it's long-term. It's really important to make sure these people aren't forgotten. This earthquake happened in October, early October, and the winters start quite early in the mountains in sort of mid-November. So there was really only 1 month in order to get people safe. So that's where the NATO forces came in. For the first time ever that NATO forces had come to Pakistan to help in this sort of humanitarian situation. We've analysed the situation to see what specific help we, NATO, could provide. And that turned out to be medical capability, particularly field hospitals, the ability to operate in the fairly rough and challenging terrain of Kashmir. Helicopter capability, because of course having moved goods into Islamabad, those goods then had to be moved up into the mountains. Partly that was done by Jinga lorries, the trucks driven by Pakistani drivers, but much of it was carried by helicopters, which led us to providing a helicopter capability. There was an engineering group that came from the United Kingdom who were specialised in building shelters at high altitude. They'd been on training in Norway at the time, and they came out here, and during the 3 months, 2.5 months that they were here working up in the earthquake zone, they built 60 shelters, community shelters, which undoubtedly helped save lives over the winter. हमें ये भी एहसास था कि हम इतने बड़े एरिया में जो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, हेलीकॉप्टर्स के साथ ये रिलीफ ऑपरेशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जल्दी से जल्दी सड़कें खोलें ताकि रिलीफ गुड्स को हम बजाय हेलीकॉप्टर्स के रोड्स के ज़रिए आगे पहुंचा सकें। What we have done as the UK, we have paid for, as an emergency really, is the provision of something like 40 bridges that have been built and are providing access to allow materials and supplies to be transferred to the affected areas. This is a new bridge they build up. Old is broken. ये RCC सामने पे ब्रिज है। ये 8 अक्टूबर के दलदले के दौरान डैमेज हुआ है। उसके बाद ये इसका अमदाद के तौर पर सामान ब्रिटिश के बरतानिया की तरफ से जब पहुँचा जून के महीने में इसका काम शुरू किया गया और जून के महीने में ये 8 दिन में हमारा काम है। एक इसके लिए माहिर आए जो आर्मी से रावलपिंडी से एक मेजर ताहिर साहब आए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपने एक 30,000 किलोमीटर एरिया के काम करना है, जिसके अंदर स्कूल आपने 6,000 से ज़्यादा स्कूल बनाने हैं, 6,600 किलोमीटर सड़कें बनानी हैं, कोई 4,000 वाटर सप्लाई स्कीमें बनानी हैं, 350 आपके अस्पताल बनने हैं, 6 लाख आपके घर बनने हैं, तो अगर आप इस चैलेंज को देखें और हम 1 साल बाद जहाँ पर खड़े हैं तो मेरा ख्याल है हमने एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। ये हमारा घर आर्मी बना रही है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमारा बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आर्मी फ्री में बना रही है। तो जो मुआवजा है ना तो वो उसका बना रही है, फ्री में बनाती है। The army were very closely involved particularly in the relief phase, because they were present on the ground, and despite the fact that they lost a lot of people themselves in the earthquake, they were the people who could help with that rescue effort. Then, as one moves towards the relief and reconstruction phase, we've been increasingly working with more civilian agencies, and particularly with the Earthquake Reconstruction Authority that has been set up to take forward that longer-term reconstruction. शुरू में ईरान ने जो है वो 3 मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद उन्होंने 2 वापस ले लिए और जो एक उसमें वुड बेस था, लकड़ी के साथ बनने का था, जो कि वहाँ के ट्रेडिशनल तरीका भी था और लोग जो है वो उस बनाने के आदी भी थे, जो कि जिसने ये भी साबित किया इस पूरे सर्वे में हमारे के अंदर कि वो घर जो कि लकड़ी के साथ बने हुए थे वहाँ पे ज़िंदगी अमवात जो है वो कम हुई, और जो कंक्रीट बेस था ये स्ट्रक्चर जब कोलैप्स हुए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जानी माल नुकसान किया।
تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی اس کو رائج کیا جائے، لیکن وہ جو ہے وہ پالیسی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ پھر نہیں بات بنی۔ ہم نے تمام جو ڈیزائنز دیے ہیں وہ انجینئرنگ سلوشنز ہیں اور وہ سائسمکلی ریزسٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے ہم نے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی ہے اور کنسٹرکشن مٹیریل ہبس بھی کھولے ہیں تاکہ ادھر وہ مٹیریل ان کو جو ہے وہ سستا مل جائے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ضرور ہیں جہاں پر ان مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہو جائے گی اور لوگوں سے جو سیمنٹ اور سٹیل کا گھر ہے وہ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے اب ایک نیا ڈیزائن جو کہ ٹمبر فریم، لکڑی کے فریم کا ڈیزائن ہے، وہ اپروو کر دیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ Key to a successful disaster relief operation is coordination with the multitude of organisations that come to the area. And I have to say I salute the Pakistani government for setting up the Federal Relief Commission, which coordinated the efforts of the Pakistani army, who bore the brunt of the disaster relief operation, together with our own efforts, together with the efforts of individual nations, plus the wide array of international organisations. Essentially, there's a whole different range of reconstruction activity that needs to go on. There's the public buildings, the schools, the hospitals that have to be rebuilt. There's the private homes, the infrastructure, the roads, etc., that have to be rebuilt. And then the economy itself of the area has to be reconstructed and possibly even enhanced. यहाँ 2260 लोग हैं, 227 फैमिलीज हैं और 73 व्हीकल बिल्ड हुई है। हमें स्कूल की ज़रूरत है और पानी की, और गांव में अस्पताल की ज़रूरत है। इस तरह बाकी बहुत सी चीज़ों की भी हमें। इस वक्त लोगों को ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि उनको घर मिलें, पानी की सप्लाई मिले, और फिर उनके जो बिज़नेसेस तबाह हो गई हैं। इस वक्त उनके पास किसी किस्म का कोई ज़रिया माश नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो करने का है वो है कि लोगों को मुख्तलिफ़ ज़रिया माश के ट्रेनिंग्स दी जाएं ताकि वो कोई स्किल सीखें और फिर अपना काम शुरू करें। हर लड़के को एक प्लम्बर की किट्स जिसमें उसके तमाम औजार होते हैं, और हर मेसन को उसके तमाम औजार के साथ एक किट्स फराम की, इलेक्ट्रिक वाले को एक औजार के साथ किट फराम की, और हर ख़वातीन को एक हमने वो सिलाई मशीन फराम की ताकि वो इस काम को सीख के अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सके। What is very noticeable is that most of the people who lived in those areas, they do want to stay there. They want to go back to where they had their houses and their property and their livestock. They want to go and rebuild their houses that have fallen down, rather than move elsewhere within the country. یہ ہم نے جگہ خرید کے ہم بنا رہے ہیں. ہماری جو پہلے تھی وہاں پہ ایسے شگاف پڑ گیا, 2 فٹ کا تقریباً شگاف پڑ گیا. وہاں پہ رہنے کے لیے ہم جاتی نہیں, ڈر لگتا ہے اس جگہ سے. آہستہ آہستہ بارہ کہ رستہ نہیں ہے, رستہ پہ پرابلم ہے. ہمیں پانی کی پرابلم ہے, بہت پرابلم پانی کی. ہمیں ایک تو مٹیریل بہت مہنگا ہو چکا ہے, گاڑیوں کی گاڑی اتنی مل نہیں رہی, اور جو مل رہی ہے جس جگہ پہلے 2000 میں گاڑی آتی تھی اب 5000 میں آتی ہے. ہر چیز کی پرابلم ہے, یعنی کہ یہ ریتی ہے, بجری ہے. ہمیں یعنی تقریباً یہ 5000 روپے کا فٹ ملتا ہے, 100 فٹ ملتا ہے 5000 کا. اتنی پرابلم ہے. پہلے ہمیں تقریباً 1000 میں لیتے تھے, ابھی ہمیں تقریباً 5000 پہ 5 گنا زیادہ دینا پڑتا ہے. پہلے کیونکہ جس کے گھر بھی تھا وہ کچا مکان تھا, اب وہ اچھا مکان بنا رہا ہے, نقشے کے مطابق بنا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی آرگنائزیشنیں ہیں جو یو کے بیسڈ ہیں, وہ یہاں پہ مختلف قسم کی ٹریننگیں شروع کروا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی NGOs بن رہی ہیں گاؤں کے اندر, بہت سی اویئرنیس آ رہی ہے. اب انشاءاللہ کہ آئندہ مستقبل میں یہ لوگ بہت زیادہ ترقی کریں گے. اسکول کے بچوں کے لیے ہم نے انگلینڈ سے ایک ٹیم منگوائی. بچے تو جو ہے وہ سیریس لوگ نہیں ہیں, وہ تو بچے ہیں, تو ان کی زندگی میں جانے کے لیے ان کو اگر ہیلپ کرنا ہے تو ان کی زندگی میں جانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ اسی طرح کے ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے وہ ایک سنیما ٹو کشمیر پروجیکٹ چلایا, جو کہ آزاد کشمیر کے 4 اضلاع اور پیٹاگرام کے اندر گیا, اور اس کے اندر انہوں نے ان کو بچوں کو فلمیں دکھائیں. پھر جو اس کے اندر جو خاص طور پہ